Good morning, students. Today we will do our first poem, My Mother at 66. It's written by Kamala Das. So I think this is the only Indian poem whose poem we are reading. Whose poem we are reading. So just remember that name. It's very important. Kamala Das, My Mother at 66. This poem is also very important. Okay, so let's start with the poem. I'm here to explain this. So this poem basically shows us the agony of a child and a parent. Basically we all know that aging is a natural process, but to see our parents to be aged, it's very difficult. ठीक है ना, यानी कि उम्र के साथ साथ बुढ़ापा जो है, ओल्ड एज जो है, इट्स वेरी नेचुरल टू कम. बट हम अपने पेरेंट्स को उस तरीके के फीबल यानी कि टेम सिचुएशन में, वीक सिचुएशन में नहीं देखना चाहते. दैट्स आवर पेरेंट्स आर एजिंग एंड दे नीड अस एंड डू वी वांट टू, बट वी आर नॉट देयर टू हेल्प देम. ठीक है ना, बिकॉज the same time our parents are aging and the same time we need to settle our career, we need to go somewhere else for the job purpose or for study purpose. So that is the basic scene, or you can say theme of this poem. So here the poet is sharing the condition of her mom while she was separating from her mother. She was going away from her mother. So let's start with this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. ये जो हमारी पोएटिस है कमला दास, शी वॉज गोइंग टू कोचीन. ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के होम से, घर से फ्राइडे को ये कोचीन जा रही है. एंड इन द मॉर्निंग टाइम शी सॉ हर मदर फेस एंड शी वॉज सिटिंग जस्ट बिसाइड हर. डोज ओपन माउथ, हर फेस अशेन लाइक दैट. डोज मीन्स हर फेस इज स्लीपी, उनका मुंह जो है खुला हुआ है. शी इज़ इन अ काइंड ऑफ पोजिशन लाइक स्लीपी यॉर्निंग पोजिशन एंड हर फेस इज़ अशेन लाइक दैट. मीन्स उनका फेस जो है ना, इट हैज़ नो सिंबल ऑफ लाइफ. अशेन वर्ड जो है ये ऐश से बना है, ASHEN. अशेन मीन्स राख. मीन्स देर इज़ नो लाइफ ऑन अ फेस, इट इज़ क्वाइट सीम्स लाइक ड्राई एंड डेड. ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन. पोइट कहता है कि हर फेस इज़ लाइक ऑफ अ कॉप्स. वो कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, एंड उनके फेस पे काफ़ी शी इज़ लुकिंग सर्टन काइंड ऑफ पेन. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं एंड शी इज़ रियली ओल्ड एंड शी इज़ लुकिंग वेरी ओल्ड. ओके, इन नेक्स्ट पैरा, बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling. But now the poet is very sad to see the situation of her mother and she wanted to distract herself and her mother also. उस ख्याल को कि उसकी मदर जो है वो बूढ़ी हो रही हैं, she is achieving the old age, उस ख्याल को निकाल देना चाहती है. So she distracted herself and she put that thought away and looked out at young trees sprinting. Looked out at young trees sprinting means they are driving in a car, and trees are sprinting means trees are walking fastly in an opposite direction. We all have noticed that जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं हमारे पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे हम नहीं चल रहे, they are moving. So the same effect has been mentioned here. The merry children spilling, merry means happy. Then she saw that the merry, बहुत खुश हैं कुछ बच्चे, and they are just coming out of their houses and scattering to different direction. कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards, and I looked again at her. ओके, सो वो अपने मदर के एजिंग के ख्याल को अपने दिमाग से निकालती है, हंसते हुए बच्चों की तरफ ध्यान देती है जो कि खेलने के लिए अपने घर से बाहर आए हैं. सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द पोइट्स सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एंड दीज चिल्ड्रन सेपरेशन फ्रॉम द देयर पेरेंट्स. यानी कि पोइट सेपरेशन इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और मे बी अ परमानेंट, बिकॉज मे बी शी डेड, शी डजंट नो, है ना. लेकिन जो बच्चे हैं वो शायद 1 hour खेलेंगे, मे बी दे विल प्ले फॉर 2 hours एंड दे विल गेट बैक टू देयर पेरेंट्स. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस. नाउ शी रीच टू द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट चली गई एंड शी इज़ स्टैंडिंग अ फ्यू yards अवे फ्रॉम हर मदर एंड शी वॉचिंग अगेन एट हर. ओके, नाउ शी इज़ सेइंग हाउ हर मदर फेस इज़ लुकिंग. हर फेस इज़ वैन, पेल, पीला पड़ा हुआ है. ओके, बहुत वीक लग रहा है और बहुत ही पीला लग रहा है. एज अ लेट विंटर्स मून फेल दैट ओल्ड, जैसे कि किसी सर्दियों की रात का चांद होता है जो कि काफ़ी ड्राई होता है. इन द सेम मैनर द फेस इज़ लुकिंग एंड शी वॉज फीलिंग द फेमिलियर एक. फेमिलियर एक, ACHE, एक मीन्स होता है पेन. द पेन इज़ कॉल्ड फेमिलियर हियर बिकॉज द पेन
the both of them are feeling this pain, and this pain is there since the childhood of the poetess. कोई भी बचपन से लेकर बड़े तक हमारा एक ही डर होता है कि we will never get separated from our parents. So this is a thing. तो वो शुरू से ही इस चीज़ से डरते थे, but at last they have to face this thing. My childhood's fear, so this is the poetess child's fear, but all I said was see you soon, Amma. But she again distracted herself. She wanted to hide her feeling, she wanted to hide her feelings, and what she did, all I did was smile and smile and smile to hide her true feelings and to give a fake hope to her mother. What she did, she just smiled and smiled and smiled. So this is the translation of the poem. I hope you understood, and whatever the new word which came in the poem, you have to write it in your notebook. Make a register. Only one register is needed, no separate notebooks for different books. Okay, एक ये जो word आया है, उसके अलावा और भी कुछ जो न्यू वर्ड्स हैं वो आप न्यू वर्ड्स की हेडिंग डाल के 4-5 वर्ड्स ज़रूर लिखेंगे और उनकी मीनिंग लिखेंगे. रेस्ट आई विल टेल यू. ओके, थैंक यू.